Hello everyone, this is Madiha, and I wanted to take out some time to explain the project structure details to you as well as the overall thesis timeline so that you know कि आपके इस कोर्स से क्या deliverables हैं और overall आपको कौन से टाइम पे कौन सा टास्क कंप्लीट करना है to stay on schedule. So as you know, इस दफ़ा आपके पास दो ट्रैक्स अवेलेबल हैं, एक है प्रोजेक्ट ट्रैक और एक रिटन थीसिस ट्रैक है. ट्रेडिशनली आप लोग रिटन थीसिस ट्रैक करते आए हैं, सो आई नो कि इस टाइम पे प्रोजेक्ट ट्रैक थोड़ा सा एम्बिगुअस है एंड आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि उसके बेसिकली उसका पाथवे किस किस्म का है और कौन से कुछ चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी हैं प्रोजेक्ट ट्रैक के अंदर. सो सबसे पहले आई वांट टू डिस्टिंग्विश कि ये प्रोजेक्ट एक आर्ट प्रोजेक्ट नहीं है. This is not a work that you make as a creative practitioner, but as a researcher. So this is not something जो कि एक white cube gallery space के अंदर जाके exhibit होगा, बल्कि I'll tell you कि कौन से formats में submit होगा as well in a little bit. बट जो है इसका इन्वेस्टिगेटिव रिगर और रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं, रिसर्च के जो कन्वेंशंस हैं, वो आर वेरी सिमिलर टू द रिटन प्रोजेक्ट. कुछ जो डिफरेंसेस हैं आई विल गो ओवर दैट नाउ एज वेल. सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद द फैक्ट कि अभी तक आप लोग जो काम करते आ रहे हैं दैट इज़ कॉमन बिटवीन बोथ प्रोजेक्ट ट्रैक एंड द रिटन ट्रैक. कि बेसिकली जब आप अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं कि वो आंसरेबल रहे और आपकी स्कोप ऑफ स्टडी को डिफाइन करे या डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन को सजेस्ट करे. आप अपने सब क्वेश्चंस किस तरीके से उसमें से निकाल रहे हैं, फिर आप किस तरीके से लिटरेचर सेलेक्ट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स डिफाइन कर रहे हैं और इवेंचुअली आप एक लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं इन अ नैरेटिव फॉर्म. ये सब जो है आप दोनों को करना है, बेशक आप प्रोजेक्ट ट्रैक की तरफ जा रहे हैं या आप रिटन थीसिस ट्रैक की तरफ जा रहे हैं. सो उसके बाद देन यू विल डिसाइड कि आप कौन सी तरफ जा रहे हैं. सो वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई हियर इज़ कि अभी तक आप जो लिटरेचर सेलेक्ट कर रहे हैं टू राइट योर लिटरेचर रिव्यू, that's mostly textual. That's either like journal articles or books or whatever written material you can find. And that's fine. That's good that you're trying to read something जिसके अंदर जो है वो रिसर्च के पैरामीटर्स को ही सामने रखकर वो काम किया गया है. बट इफ़ यू इवेंचुअली डिसाइड टू गो टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट ट्रैक, आप अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर और किस्म की चीज़ें भी डाल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक उसी किस्म का प्रोजेक्ट और देखा है एंड दैट हैज़ लेड यू समवेयर, या फिर आपने फील्ड वर्क देखा है, वट एवर इट इज़. एंड ओवर हेयर आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट कि साइटेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं. सो फार आप अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर साइट कर रहे हैं बहुत फॉर्मली कंटेन्ड थिंग्स, फॉर एग्जांपल जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन बेसिकली अगर आप सोचें इस बारे में कि साइटेशन का मकसद क्या होता है, विच इज़ दैट यू गिव क्रेडिट टू अदर आइडियाज़ वेयर इट इज़ ड्यू or to other strains of thought where it is due, and you imagine the politics of citation, that is जहाँ से भी आप अपना ग्राउंड रिसीव कर रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स मिल रही हैं कि बेशक वो एक फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से हो, आपको उसको साइट करना चाहिए as long as you can find evidence for it. So citations may include like even oral histories, or it may include anecdotes, or it may include other kinds of parameters जो कि normally एक textual research के अंदर शामिल नहीं होते हैं. And कि जब आप APA formats को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको ये और किस्म की चीज़ें भी बताते हैं कि वेबसाइट को किस तरीके से साइट करना है या किसी और अनकन्वेंशनल चीज़ को किस तरीके से साइट करना है. So after clarifying that, we move on to the fact कि आपका literature review can expand to include things other than textual stuff as long as it is evidence based. Okay, so project track के अंदर अब आए हम, तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका फॉर्म या फिर इस प्रोजेक्ट की शक्ल क्या होगी. ओके, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, एक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं या प्रोसेस डिसाइड कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आप एक कॉमिक बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, और यू कैन राइट समथिंग, और यू कैन डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल टूल्स,
or you can design, maybe some kinds of technologies that help you in your pedagogical practice or teaching practice, या in classroom को वो किसी तरीके से facilitate करें, या students की ज़िंदगी को वो किसी तरीके से impact करें. Activity के अंदर आप अगेन क्लासरूम के अंदर कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं जो आपने डिज़ाइन की हो, या फिर आप किसी और पेडागोजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं. प्रोसेस का मतलब ये है कि आप इट्स वेरी क्लोज टू एक्टिविटी बट अ लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज विद इन एक्टिविटी you might be engaging other participants, whereas in process it's not necessary कि ये एक action तक इस stage पे पहुँचे या फिर ये और participants को engage करे. So process for example can be a material process, or it can be a thought process, or any of those things. But I want to clarify कि stage 1 तक काम करना is not the end of the project structure. Okay, that's just the beginning. So अगर आपने एक comic book design कर ली है, let's say to integrate, I don't know, arts and sciences, or to teach sciences through like a graphic novel, you're not done when the graphic novel is written. Then you have to take it back to the field to reach stage 2, which is execution. So whatever you design in your stage 1 form या शक्ल जो आप डिज़ाइन करते हैं, फिर stage 2 के अंदर आपको उसको execute करना भी ज़रूरी है. Now I want to clarify at this stage कि ये वाले चीज़ें मैंने ज़रा tentatively अभी define की हैं, which means कि ज़रूरी नहीं है कि हर project का stage 1 और stage 2 linearly ही follow करे कि form पहले आए और फिर execution हो. It can also be reversed, और you will also find कि जब आप project execute कर रहे हैं या आप ये track के अंदर चल रहे हैं, you will realize कि शायद stage 1 और stage 2 काफ़ी हद तक overlap भी करें. Okay, so it is up to you to define the scope of these stages as long as your project contains these stages. All right, so for example, if you're making a documentary, then it's very likely कि आपकी जो execution है वो form के साथ काफ़ी related हो, या जो कि maybe आप किसी जो आप documentary बना रहे हैं वो किसी activity के ऊपर based हो, या किसी geography के ऊपर based हो, या किसी location के ऊपर based हो, तो आपकी execution के अंदर ज़्यादा टाइम जाएगा और आपकी एक्टिविटी के अंदर काफ़ी कम वक्त लगे एज comparatively. All right, so at the end of stage 2, when you have executed this work, तो आपका project एक काफ़ी हद तक शक्ल में आ जाएगा. But again, you're not done yet. This is kind of like आपने I would equate this stage to written project के अंदर जब आप data collect कर लेते हैं, ठीक है, अब उसके साथ आपने करना क्या है. So this is a very important part, that everything that you have done so far has to pass through the lens of interpretation. Okay, so this is actually the area जहाँ पे आप knowledge create कर रहे हैं, या आप अपना unique contribution कर रहे हैं, जो कि research के अंदर incredibly important है. So आप stage 2 के अंदर जब execute करेंगे अपने stage 1 को, तो आपके पास जो कुछ भी findings आएंगी आप उनको interpret करेंगे in some sort of way, and then you will decide stage 3, which is कि आपका project किस शक्ल के अंदर submit होगा. Okay, so this has to be necessarily a soft copy submittable format. Okay, which means कि आप एक play नहीं, you can't put up a play in a theater, or you can't have like a sculpture, or if you do have these things, I firstly not encouraging again an art project at all, because this is very distinct and very different. But whatever you do, you will be documenting it and submitting it in a soft copy format. So think about कि आपको ये आपका जो submittable format है वो आपके project को best serve कैसे करता है. So for example, if it's a documentary, then you will just be uploading like the video file, and along with that आप जब submit कर रहे होंगे इस stage के ऊपर, तो आप जो अभी काम कर रहे हैं वो एक textual format में भी साथ जाएगा. You know that there's a written report accompanying the project as well, which would include like setting up your research question, your a little bit of your literature review, as well as a bibliography. Okay, so there has to be a compulsory bibliography with the project based track. So ये वाला सारी चीज़ें होंगी और वो वीडियो फाइल होगी, ठीक है. लेकिन अगर आप कोई किसी और किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, so maybe you will make a PowerPoint out of it, maybe you will make a PDF out of which is just one file with text and images and documentation,
everything all together. Okay, so this is up to you, but as long as कि ये एक soft copy format हो जो कि eventually एक library के अंदर exist कर सके, so that anybody who accesses it can go through this stage and understand everything that happened from stage 1 till here. Okay, so think a lot about कि आप जब stage 3 पर पहुंचते हैं, तो this is the stage that will go to your external examiners, and external examiners are not familiar with everything that you've done for the past year, so you kind of have to take it step by step and lead them through this. Okay, so I would suggest कि presentation format या PDF format works kind of well for it. You can also think about like maybe a website format or a publication format, as long as it is a soft copy, as long as you submit like documentary evidence of everything. And of course, like I want to re-stress again the fact that everything has to be interpreted. So your findings have to have like, you have to have a unique take on your original research question. So this is overall the project का structure. So that is, आपके पास choice है कि इस दफ़ा आप written या project track की तरफ जा सकते हैं. And soon we will be asking you about it as well कि अभी तक आप क्या सोच रहे हैं.